নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল মোৰ ইউটিউব চেনেল এডুকেটামলৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি ক্লাছ 10ৰ হিন্দী ইলেক্টিভ আলোক ভাগটোৰ যেটো 2 নম্বৰ লেসন আছে ছোটা জাদুগাৰ হেতু অসমীয়াতে আলোচনা কৰিম। যদিহে তোমালোকে ভিডিওটো চাই ভাল পোৱা তেতিয়াহলে লাইক কৰিবা, কিবা নুবুজা থাকিলে কমেন্ট কৰিবা আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা। আহা ভিডিওটি আৰম্ভ কৰো। कार्निवल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी। कार्निवलर जिखन कार्निवल नाমৰ ঠাই আছিল তাত যিখন मैदान আছিল মানে পথাৰ বুলি ক'ব পাৰো আমি, তাত কি হৈছিল চাৰিওফালে মানে বিজুলীৰ পোহৰে মানে জিকমিক কৰি আছিল। हंसी और विनोद का कलानत गूंज रहा था। হাঁহি আৰু আনন্দৰ এটা পৰিবেশ মানে ভাল লগা পৰিবেশ এটা চাৰিওফালে তাত মানে ভাল লগা পৰিবেশ এটা আছিল। मैं खड़ा था उस सोते फुहारे के पास जहाँ एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। मैं ठिय হৈছিলোঁ সেই ফুহাৰা মানে আমি ক'ব পাৰোঁ য'ত অকণমান পানী জমা হৈ থাকে, বৰষুণৰ পানী বা কিবা বেলেগ পানী জমা হৈ থকা এনেকুৱা ঠাইখিনিৰ কাষত মই থিয় হৈছিলোঁ য'ত মানে কি আছিল এজন ল'ৰাই মনে মনে চৰবত বিক্ৰী কৰা মানে চৰবত খোৱা মানুহবিলাকক চাই আছিল। उसके गले में फतेह कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। जितो कापुर पिंधिছিল फटा कुर्ता এটা পিন্ধিছিল আৰু কি কৰিছিল जेबत কি আছিল ताशर माने ताश केखनमान আছিল ताशपात केखनमान আছিল। उसके मुख पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य का रेखा थी। तार मुखत কি আছিল गंभीर भावर लगते धैर्य দেখা পোৱা গৈছিল। मैं उसकी ओर न जाने क्यों आकर्षित हुआ। मैं नाजानो किय तार फाले आकर्षित हलो। उसके अभाव में भी संपूर्णता थी। ही अभावत आसिल किंतु ही की आसिल संपूर्ण आसिल। मैंने पूछा क्यों जी तुमने इसमें क्या देखा। मैं सुधिलो जे तुमी यात की देखा पाइसा। मैंने सब देखा। ही उत्तर दिसिल जे मैं सब देखिसो यहाँ छुरी फेंकते हैं। यात की करा है छुरी दलियाई दिए चाकू दलियाई दिए खिलौनों पर निशाने लगाते हैं। तार पिছত जिबिला खिलौना আছে খেলা বস্তু আছে তাত কি কৰে নিশানা লগাই तीर से नंबर छेदते हैं। ये जी तीर আছে कार আছে कारे नम्बरবোৰ बिंधाई। मुझे तो खिलौने पर निशाना लगाना अच्छा मालूम हुआ। मैं এই যে খেলা বস্তুবিলাকত নিশানা লগাব লাগে সেইটো খেল মোৰ ভাল লাগিছে। जादूगर तो बिल्कुल निकम्मा है। जिजन जादूगर আছে সেইজন কি হয় একেবাৰে এলেহুৱা হয়। उससे अच्छा तो ताश का खेल मैं दिखा सकता हूँ। সেই जादूगरজনতকৈ বেছি ভাল ताशৰ খেল মই দেখুৱাব পাৰোঁ। उसने बड़ी प्रगल्भता से कहा। ही एकेबारे কোনো ধৰণৰ মানে সংকোচ নকৰাকৈ কথাখিনি কৈছিল। उसकी बानी में कहीं रुकावट ना थी। तार কথাত কুটু মানে হি ৰৈ যোৱা নাছিল মানে ইমান ধুনীয়াকৈ কৈছিল। मैंने पूछा और उस पर्दे में क्या है वहाँ तुम गए थे। আৰু মই সুধিলোঁ যে সেই পৰ্দাখনৰ পিছফালে কি আছে তাত তুমি গৈছিলা নেকি। नहीं वहाँ मैं नहीं जा सकता टिकट लगता है। ही কৈছিল যে মই তাত যাব নোৱাৰোঁ তাত কি লাগিব টিকট লাগিব। मैंने कहा তেতিয়া মই কৈছিলোঁ तो चला मैं वहाँ पर तुमको लिवा चलूँ। তেনেহ'লে ব'লা মই তোমাক তাত লৈ যাম। मैंने मन ही मन कहा भाई आज के तुम ही मेरे मित्र रहे। মই মনে মনে কৈছিলোঁ যে আজি তুমিয়ে মোৰ মিত্ৰ হ'বা। उसने कहा ল'ৰাজনে ক'লে यहाँ जाकर क्या कीजिएगा। তাত গৈ কি কৰিব। चलिए निशाना लगाया जाए। बोलोक निशाना लगाओ। मैंने उससे सहमत होकर कहा तो फिर चलो पहले शरबत पी लिया जाए। मैं तार कथात माने सन्मति जनाई मैं কৈছিলোঁ তেনেহ'লে बोला प्रथमे आमी शरबत खाई लওঁ। उसने स्वीकार सूचक सिर हिला दिया। ही माने मोर कथाটো स्वीकार কৰি ল'লে আৰু মূৰটো ডুপিয়াই দিলে। मनुष्य की भीड़ से जाड़े की संध्या भी वहाँ गर्म हो रही थी। সেইটো এটা জাৰৰ দিনৰ মানে ঠাণ্ডা দিনৰ সন্ধিয়া আছিল কিন্তু ইমান বেছি মানুহ আছিল যে তেতিয়াও ঠাণ্ডা দিনতো আমাৰ গৰম লাগিছিল। हम दोनों शरबत पीकर निशाना लगाने चले। আমি দুয়ো শৰবত খাই নিশানা লগাবলৈ গ'লোঁ। राह में ही उसने पूछा तुम्हारे और कौन है। গৈ থাকোঁতে মই ৰাস্তাতে তাক সুধিলোঁ যে তোমাৰ আৰু কোন আছে মানে তোমাৰ ঘৰত আৰু কোন কোন আছে। माँ और बाबूजी। ही उत्तर दिले जे माँ और देउता। उन्होंने तुमको यहाँ आने के लिए मना नहीं किया। मैं सुधिলোঁ जे তেওঁলোকে তোমাক ইয়াত আহিবলৈ মানা কৰা নাছিল নেকি। बाबूजी जेल में है। তেতিয়া ল'ৰাটোৱে কৈছিল যে মোৰ দেউতা জেলত আছে। কিয় देश के लिए वो गर्व से बोला। ही গৰ্বেৰে ক'লে দেশৰ কাৰণে। और तुम्हारी माँ আৰু তোমাৰ মা वह बीमार है। मार অসুখ হৈছে, মাৰ বেমাৰ।
और तुम तमाशा देख रहे हो और तुम्ही ইয়াতে আহি খেল চাই আছা। उसके मुख पर तिरस्कार की हंसी फूट पड़ी। तार मुखत तिरस्कार सूचक हाहि এটা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। उसने कहा तमाशा देखने नहीं दिखाने निकला हो। সি ক'লে যে মই ইয়াতে খেল চাব অহা নাই, মই নিজে খেল দেখুৱাব আহিছোঁ। कुछ पैसे ले जाऊंगा तो माँ को पथ्य दूंगा। किबा अलप पैसा লৈ গ'লে মাক খোৱা বস্তু দিম। मुझे शरबत ना पिलाकर अपने मेरा खेल देखकर मुझे कुछ दे दिया होता तो मुझे अधिक प्रसन्नता होती। আপুনি মোক যদি শৰবত নোখোৱালে হয় আৰু মোৰ খেল চাই যদি মোক কিবা দিলে হয় মই তেতিয়া বেছি আনন্দিত হ'লো হয়। मैं आश्चर्य से उस 13-14 वर्ष के लड़के को देखने लगा। मैं आश्चर्यित হৈ এই 13-14 বছৰীয়া ল'ৰাজনৰ ফালে চাবলৈ ধৰিলোঁ। हाँ, मैं सच कहता हूँ बाबूजी, माँ जी बीमार है इसलिए मैं नहीं गया। मैं সঁচাকৈ কৈছোঁ, বাবুজি বুলি মাতিছে লিখকক, যে মই সঁচাকৈ কৈছোঁ বাবুজি মোৰ মা বেমাৰ হৈ আছে সেইকাৰণে মই নগ'লোঁ। कहा ক'ত? जेल में। ही उत्तर दिले जे जेलत। जब कुछ लोग खेल तमाशा देखते ही है तो मैं क्यों ना दिखाकर माँ की दवा दारू करूँ और अपना पेट भरूँ। কৈছে যিহেতু কিছুমান মানুহে এইবিলাক খেল তামাচাই দেখাই থাকে গতিকে ময়ো এইবিলাক দেখুৱাই কি কৰিব পাৰোঁ, মাৰ কাৰণে দৰৱ কিনিব পাৰোঁ, মই নিজে খাব পাৰোঁ। मैंने दीर्घ निश्वास लिया। मैं दीर्घ निश्वास लলোঁ। चारों ओर बिजली के लट्टू नाच रहे थे। চাৰিওফালে বিজুলীৰ পোহৰ, বিজুলী বাতিবিলাকে নাচি আছিল। मन व्यग्र हो उठा। মোৰ মনটো ব্যগ্ৰ হৈ উঠিছিল। मैंने उससे कहा, मैं তাক ক'লোঁ, अच्छा चलो निशाना लगाया जाए। बोला निशाना लगाओ। हम दोनों उस जगह पर पहुँचे जहाँ खिलौनों को गेंद से गिराया जाता था। আমি দুয়ো সেই ঠাইলৈ গ'লোঁ য'ত খিলনাবিলাকক গেন্দেৰে বলেৰে কি কৰা হৈছিল, বল মাৰি खिलौनाবিলাকত পেলাই দিয়া হৈছিল। मैंने 12 टिकट खरीद कर उस लड़के को दे दिए। মই 12টা টিকট কিনিলোঁ আৰু সেই ল'ৰাজনক দিলোঁ। वह निकला पक्का निशानेबाज। সি এজন পক্কা নিশানাবাজ আছিলে, মানে সি যিটোৱে নিশানা কৰি যিটো বল মাৰিছিলে সেইটো কেতিয়াও এনে যোৱা নাছিলে। उसका कोई गेंद खाली नहीं गया। তাৰ কোনো এটা বলে এনে যোৱা নাছিলে। देखने वाले दंग रह गए। যিবিলাকে চাই আছিলে সেইবিলাক আচৰিত হৈ গৈছিলে। उसने 12 खिलौनों को बटोर लिया। সি 12টা खिलौना মানে লৈছিল। लेकिन उठाता कैसे, কিন্তু সি কেনেকৈ উঠাব পাৰে ইমান। कुछ मेरे रुमाल में बांधे, कुछ जेब में रख लिए। কিছুমান মোৰ ৰুমালত বান্ধিলে, কিছুমান জেবত থলে। लड़के ने कहा, बाबूजी आपको तमाशा दिखाऊंगा। ক'লে যে বাবুজি মই আপোনাক তামাশা দেখুৱাম, বাহিৰ আইয়ে, বাহিৰলৈ আহক। मैं चलता हूँ, मैं आऊँ। वह 9-2-11 हो गया। সি 9-2-11 हो गया মানে সি নোহোৱা হৈ গ'ল। मैंने मन ही मन कहा, इतनी जल्दी आँख बदल ली। মই মানে ওলাই আহি সি নোহোৱা হৈ গ'ল, গতিকে মই মনে মনে ভাবিলোঁ যে ইমান সোনকালে সি ইমান সলনি হৈ গ'ল বা ইমান সোনকালে গুচি গ'ল। मैं घूमकर पान की दुकान पर आ गया। মই অকণমান ঘূৰি পানৰ দোকানলৈ আহিলোঁ। पान खाकर बड़ी देर तक इधर उधर टहलता रहा। पान खाই बहुत সময়লৈ ইফালে ইফালে ঘূৰি ফুৰিলোঁ। झूले के पास लोगों का ऊपर नीचे आना देखने लगा। সেই ঝুলনাবিলাকৰ ওচৰত থিয় হৈ মানুহবিলাকে ওপৰৰ পৰা তললৈ অহা এইবিলাক চাই আছিলোঁ। अकस्मात किसी ने ऊपर के हिंडोलों से पुकारा, बाबूजी। অকস্মাতে কোনোবা ওপৰৰ পৰা মোক চিঞৰিলে বাবুজি বুলি। मैंने पूछा कौन। মই সুধিলোঁ कौन। मैं हूँ छोटा जादूगर। ল'ৰাজনে উত্তৰ দিলে মই छोटा जादूगर, সৰু जादूगर। कलकत्ता के सुरम्य बोटानिकल उद्यान में लाल कमलिनी से भरी हुई एक छोटी सी झील के किनारे घने वृक्षों की छाया में अपनी मंडली के साथ बैठा हुआ मैं जलपान कर रहा था। কলিকতাৰ যিটো बोटानिकल উদ্যান আছে সেই बोटानिकल উদ্যানৰ কি কৰি আছিলোঁ, এই ঝীল মানে এটা নিজৰাৰ কাষত বহি, ঝৰ্ণা এটাৰ কাষত বহি, ঘন গছ আছিল তাৰ ছাঁত বহি আমি কি কৰি আছিলোঁ, মোৰ লগৰীয়াসকলৰ লগত আমি কি কৰি আছিলোঁ, জলপান খাই আছিলোঁ। बातें हो रही थी, আমি কথা পাতি আছিলোঁ। इतने में वही छोटा जादूगर दिखाई पड़ा। এনেতে তাত छोटा जादूगरক দেখিবলৈ পালোঁ। हाथ में सरखाने की खादी का झोला। হাতত কি আছিল, খাদীৰ এখন মোনা আছিল। साफ जंगिया और आंधी बाहों का कुर्ता। आधी बाह মানে হাত কটা এটা কুৰ্তা আছিল, হাত চুটি কুৰ্তা এটা আছিল। फिर पर मेरा रुमाल सूत की रस्सी से बंधा हुआ था। আৰু কি কৰা আছিল, চিৰ पर মূৰত কি কৰা আছিল, ৰুমালখন বান্ধি থৈ দিয়া আছিল। মোৰ ৰুমালখন ৰছীৰে বান্ধি থোৱা আছিল।
मस्तानी साल से झूमता हुआ आकर कहने लगा, एकदम মানে নাচি নাচি অহাৰ নিচিনাকৈ আহি কৈছিল, बाबूजी नमस्ते। কৈছে যে নমস্কাৰ बाबूजी, आज कहिए तो खेल दिखाऊं, আজি যদি আপুনি বিচাৰে খেল দেখুৱাম নেকি? नहीं जी, अभी हम लोग जलपान कर रहे हैं। লিখকে কৈছিল যে নালাগে, এতিয়া আমি জলপান কৰি আছোঁ। फिर इसके बाद क्या गाना बजाना होगा बाबूजी? তাৰপিছত কি গান নাচ হ'ব নেকি बाबूजी? नहीं जी, तुमको क्रोध से कुछ कहने जा रहा था। এনেকৈ মই খঙেৰে কিবা ক'বলৈ যাব ধৰিছিলোঁ। श्रीमती ने कहा, শ্ৰীমতীয়ে ক'লে, दिखलाओ जी, तुम तो अच्छे आए। কৈছে যে দেখুওৱা, তুমি বৰ ভাল সময়ত আহিছা। भला कुछ मन तो बहले, এনেকৈ চালে কিজানি মনটো ভাল লাগিব। मैं चुप हो गया, मैं मने मने থাকিলোঁ, क्योंकि श्रीमती की वाणी में वह माँ की सी मिठास थी जिसके सामने किसी भी लड़के को रोका नहीं जा सकता। कारण मोर श्रीमतीर, मोर पत्नीर कथात এনেকুৱা मार निचिना मरम আছিল যে তেওঁৰ সন্মুখত কাকো মই এনেকৈ ৰখাব নোৱাৰোঁ। उसने खेल आरम्भ किया, ही खेल দেখুৱাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। उस दिन कार्निवल के सब खिलौने उसके खेल में अपना अभिनय करने लगे। সেইদিনা कार्निवলৰ গোটেই খিলনাবিলাকে, যিবিলাক খিলনা সি তাত পাইছিলে, সেই খিলনাবিলাকে কি কৰিবলৈ ধৰিলে, তাৰ লগত অভিনয় কৰিব ধৰিলে। ভালু মনানে লগা, ভালুকে অভিমান ভাঙিব ধৰিলে। বিল্লি ৰুথনে লাগি, বিল্লিয়ে মেকুৰীয়ে অভিমান কৰিব ধৰিলে। বন্দৰ ঘুৰাকনে লগা, বন্দৰে চাৰিওফালে ঘূৰি ঘূৰি নাচিবলৈ ধৰিলে। গুড়িয়া কা বিয়া হোৱা, পুতলাৰ বিয়া হ'ল। গুদ্দা বৰ বানা নিকলা, মানে পুতলাৰে কি হ'ল, দৰা হ'ল। लड़के की वात्सलता से ही अभिनय हो रहा था। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। সকলোৱে হাঁহি হাঁহি সকলোৱে ৰ'ব নোৱাৰা হৈ গ'ল। मैं सोच रहा था, মই ভাবি আছিলোঁ, बालक को आवश्यकता ने कितने शीघ्र चतुर बना दिया है। পৰিৱেশে সেই ল'ৰাজনক কিমান সোনকালে ইমান বুদ্ধিয়ক বনাই দিছে। यही तो संसार है, এইখনেইতো সংসাৰ। ताश के सब पत्ते लाल हो गए, ताशৰ সকলো পাত লাল ৰঙা হৈ গ'ল। फिर सब काले हो गए, তাৰপিছত কলা হৈ গ'ল। गले की सूत की डोरी टुकड़े टुकड़े होकर जुड़ गए। लत्तू अपने आप नाच रहे थे। मैंने कहा, अब तो हो चुका, अपना खेल बतौर लो, हम लोग भी अब जाएंगे। তাৰপিছত মই ক'লোঁ যে এতিয়া হৈ গ'ল, তুমি তোমাৰ এইবিলাক উঠোৱা, আমিও এতিয়া গুচি যাম। श्रीमती ने धीरे से उसे 1 रुपया दे দিয়া। মোৰ পত্নীয়ে ল'ৰাজনক এটকা এটা দি দিলে। বৰ উছল উঠা, তাৰ বৰ ফূৰ্তি লাগিল। मैंने कहा, लड़के, মই ক'লোঁ যে ল'ৰা, छोटा जादूगर कहिए, यही मेरा नाम है, इसी से मेरी जीविका है। তেতিয়া ল'ৰাজনে উত্তৰ দিলে যে মোক छोटा जादूगर বুলি কওক, এইটোৱে মোৰ নাম আৰু এইটোৰে মই মানে জীবিকা অৰ্জন কৰি আছোঁ। मैं कुछ बोलना ही चाहता था कि श्रीमती ने कहा, अच्छा तुम इस रुपये से क्या करोगे? মই কিবা ক'ব খোজোঁতে মোৰ শ্ৰীমতীয়ে ক'লে যে তুমি কোৱাচোন, এই পইচাটোৰে কি কৰিবা? पहले भरपेट पकौड़ी खाऊंगा, फिर एक सूती कम्बल लूँगा। কৈছে যে প্ৰথমে মই পেট ভৰাই পকৌৰি খাম আৰু তাৰপিছত কি কৰিম, এখন কম্বল কিনিম। मेरा क्रोध अब लौट आया, এতিয়া মোৰ খং উঠিল। मैं अपने पर बहुत क्रुद्ध होकर सोचने लगा, মোৰ নিজৰ ওপৰতে বহুত খং উঠিল আৰু মই ভাবিব ধৰিলোঁ, ओह कितना स्वार्थी हूँ, मैं उसके 1 रुपये पाने पर ईर्षा करने लगा था ना। মই ভাবিব ধৰিলোঁ যে মই কিমান স্বাৰ্থপৰ হয়, এই ল'ৰাটোৱে এটকা এটা পাইছে, মই তাতে হিংসা কৰিছিলোঁ। वह नमस्कार करके चला गया, সি নমস্কাৰ বুলি কৈ গুচি গ'ল। हम लोग लताकुंज देखने के लिए गए, আমি লতাকুঞ্জ চাবলৈ গ'লোঁ। उस सोते से बनावटी जंगल में संध्या चाय चाय करने लगी थी। और সেই বনাই থোৱা মানে কৃত্ৰিম জংঘলখনত সন্ধিয়াই, মানে সন্ধিয়াৰ যিটো শব্দ, চাই চাই শব্দ হৈ আছিল। अस्ताचलगामी सूर्य की अंतिम किरण वृक्षों की पत्तियों से विदाई ले रही थी। আৰু অস্তগামী সূৰ্যৰ অন্তিম কিৰণে সেই কিহৰ পৰা, সেই পাতবিলাক, গছৰ পাতবিলাকৰ পৰা বিদায় লৈ আছিল। एकदम शांत वातावरण था, সেই পৰিৱেশটো একেবাৰে শান্ত আছিল। हम लोग धीरे धीरे मोटर से हावड़ा की ओर आ रहे थे, আমি লাহে লাহে গাড়ীৰে হাওড়াৰ ফালে আহি আছিলোঁ। रह रहकर सोता जादूगर स्मरण होता था, ৰখি ৰখি মোৰ छोटा जादूगरলৈ মনত পৰি আছিল। सचमुच वह एक झोपड़ी के पास कंबल कंधे पर डाले खड़ा था, সঁচাকৈয়ে সি এটা জুপুৰি ঘৰৰ ওচৰত কম্বল এখন কান্ধত লৈ ৰৈছিল। मैंने मोटर रोक कर उससे पूछा, মই গাড়ীখন ৰখাই তাক সুধিলোঁ, तुम यहाँ कहाँ, তুমি ইয়াতে কিয়? मेरी माँ यही है ना,
সি কৈছিলে যে মোৰ মা ইয়াতে আছে। অৱশ্যে अस्पताल वालों ने निकाल दिया है। এতিয়া হস্পিটালৰ মানুহে তেওঁক তাৰ পৰা উলিয়াই দিছে। मैं उतर गया, মই নামিছিলোঁ। उस झोपड़ी में देखा, সেই ঘৰটোলৈ চাইছিলোঁ তো एक स्त्री চিথ্ৰো में लदी हुई काँप रही थी। এজনী তিৰোতা তাতে কঁপি আছিল, ঠাণ্ডাতে কঁপি আছিল। सोते जादूगर ने कंबल ऊपर से डालकर उसके शरीर से चिपकते हुए कहा, माँ। सोता जादूगरे সেই মানুহজনীক সেই কম্বলখন গাত দি সাৱটি ধৰি কৈছিল, মা বুলি কৈছিল। মেৰি আঁখো সে आंसू निकल पड़े, মোৰ চকুৰ পৰা চকুপানী ওলাই আহিছিল। बड़े दिन की छुट्टी बीत चली थी, बरदिনৰ छुट्टी শেষ হৈছিল। मुझे अपने ऑफिस में समय से पहुँचना था, মই মোৰ সময়মতে অফিচত যাবলগীয়া আছিলে। কলকাতা से मन उब गया था, এতিয়া আৰু কলকাতাত থাকিব মোৰ মন নাছিল। फिर भी चलते चलते एक बार उद्यान को देखने की इच्छा हुई, কিন্তু তথাপিও যাওঁতে এবাৰ উদ্যানখন চাবলৈ মোৰ ইচ্ছা গ'ল। साथ ही साथ जादूगर भी दिखाई पड़ जाता तो और भी, মই মনতে ভাবিলোঁ যে যদি মই যাদুগৰকো দেখা পাওঁ আৰু বেছি ভাল লাগিব। मैं उस दिन अकेले ही चल पड़ा, সেইদিনা মই অকলে গৈছিলোঁ। जल्द लौटाना था, সোনকালে ঘূৰি আহিবলগীয়া আছিলে। 10 बज चुका था, তেতিয়া 10 বাজি গৈছিলে। मैंने देखा कि उस निर्मल धूप में सड़क के किनारे एक कपड़े पर सोते जादूगर का रंगमंच सजा था। মই দেখিলোঁ যে সেই ইমান ৰ'দত ৰাস্তাৰ মানে কিনাৰত ৰাস্তাৰ এটা ছাইডত কি আছিল, কাপোৰত সেই ছোটা যাদুগৰৰ যিখন ৰংমঞ্চ আছিলে সেইখন সজাই থোৱা আছিলে। मोटर रोक कर उतर पड़ा, মই গাড়ীখন ৰখাই তাৰ পৰা নামিছিলোঁ। वह बिल्ली रूठ रही थी, তাত মেকুৰীয়ে কি কৰি আছিল, অভিমান কৰি আছিল। ভালু মনানে চলা থা, ভালুকে কি কৰি আছিল, তাইৰ অভিমান ভাঙি আছিল। বিয়াহ কি তৈয়াৰী থি, বিয়াৰ কাৰণে সাজু হৈ থকা হৈছিল। यह सब होते हुए भी जादूगर की बानी में वो प्रसन्नता की तरी नहीं थी, এই সকলোবোৰ থকাৰ পিছতো সেই ছোটা যাদুগৰৰ কথাত ইমান আনন্দ নাছিলে। जब वह औरों को हंसाने की चेष्टा कर रहा था तब वो जैसे स्वयं काँप जाता था, যেতিয়া সি বেলেগক হহুৱাব চেষ্টা কৰিছিল তেতিয়া যেন নিজেই কঁপি উঠিছিল। मानो उसके रोए रो रहे थे, এনেকুৱা লাগিছিল যে সি কান্দি আছে। मैं आश्चर्य से देख रहा था, মই আচৰিত হৈ চাইছিলোঁ। खेल हो जाने पर पैसा बटोर कर उसने भीड़ में मुझे देखा, খেল শেষ হোৱাৰ পিছত পইচাখিনি উঠাই সি সেই ভিৰৰ মাজতে মোক দেখিবলৈ পাইছিল। वह जैसे क्षण भर के लिए स्फूर्तिमान हो गया, মোক দেখি সি তাৰ কিছু সময় কাৰণে সি তাৰ বৰ ফূৰ্তি লাগিছিল। मैं उसके पीठ थपथपाते हुए पूछा, মই তাৰ পিঠিত থপৰিয়াই দি সুধিছিলোঁ, आज तुम्हारा खेल जमा क्यों नहीं, আজি তোমাৰ খেল ইমান ভাল কিয় নহ'ল। माँ ने कहा है कि आज तुरंत चले आना, मेरी घड़ी समीप है, अविचल भाव से उसने कहा। সি দুখেৰে ক'লে যে মায়ে কৈছে যে আজি সোনকালে আহিবা, মোৰ শেষ সময় আহিছে। तब भी तुम खेल दिखलाने चले आए हो, मैंने कुछ क्रोध से कहा। তাৰপিছত মই খঙেৰে ক'লোঁ যে তাৰপিছতো তুমি খেল চাপ দেখুৱাবলৈ আহিছা। मनुष्य के सुख दुख का माप अपना ही साधन तो है, उसी के अनुपात से वह तुलना करता है। মানুহৰ সুখ দুখৰ সাধন কি হয়, নিজৰ সুখ দুখৰ মাপটো নিজেই কৰিব লাগে, তাৰে দ্বাৰাই কি কৰা হয়, সেইটো তুলনা কৰা হয়। उसके मुख पर वही परिचित तिरस्कार की रेखा फूट पड़ी, আগৰ নিচিনাকৈ তাৰ মুখত সেই তিৰস্কাৰ ভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। उसने कहा, न क्यों आता, ক'লে যে কিয় নাহিম। और कुछ अधिक कहने में जैसे वह अपमान का अनुभव कर रहा था, মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল যে মই আৰু কিবা ক'লে সি অপমানিত হ'ব। क्षण भर में मुझे अपना भूल मालूम हो गया, কিছু সময় পিছতে মই মোৰ ভুল বুজি পালোঁ। उसके झोले को गाड़ी में फेंक कर उससे भी बैठाते हुए मैंने कहा, তাৰ যিটো ঝোলা আছিল, যিখন বেগ মোনা আছিল সেইখন গাড়ীত থৈ মই তাক ক'লোঁ, জল্দি চলো, সোনকালে ব'লা। মটৰৱালা মেৰে बताए हुए पथ पर चल पड़ा, গাড়ী চলোৱা মানুহজন ড্ৰাইভাৰজনে মই কোৱা মতে গুচি গ'ল। कुछ ही मिनटों में मैं झोपड़े के पास पहुँचा, কিছু সময় পিছতে মই সেই জুপুৰিটোৰ ওচৰলৈ গ'লোঁ। जादूगर दौड़कर झोपड़े में माँ पुकारते हुए घुसा, जादूगरे কি কয় দৌৰি গৈ সেই মা বুলি চিঞৰি সেই ঘৰটোৰ ভিতৰত সোমাল। मैं भी पीछे था, ময়ো পিছত আছিলোঁ। কিন্তু স্ত্ৰী के मुँह से बे निकल कर रह गया, কিন্তু সেই তিৰোতাজনীৰ মুখৰ পৰা বে শব্দটো ওলাই ৰৈ গৈছিল।
उसके दुर्बल हाथ उठकर गिर गए। তাইৰ দুৰ্বল হাত দুখন ওপৰৰ ফালে উঠি পৰি গৈছিল। जादूगर उससे लिपटा रो रहा था। जादूगरे माকক সাৱটি ধৰি কান্দি আছিল। मैं स्तब्ध था। মই মানে আচৰিত হৈ গ'লোঁ। उस उज्जवल धूप में समग्र संसार जैसे जादू सा मेरे चारों ओर नृत्य करने लगा। সেই ৰ'দত সেই সমগ্ৰ সংসাৰখনে যাদুৰ নিচিনাকৈ মোৰ চাৰিওফালে নাচিবলৈ ধৰিলে। আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। ভিডিঅ'টোৰ এই পাঠটোৰ প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আগৰ ভিডিঅ'ত দুটা পাৰ্টত দি থোৱা আছে। যদিহে তোমালোকে আগতে ভিডিঅ' প্ৰয়োজনীয় বুলি ভাবা বা আগতে চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ' দুটা চাই ল'ব পাৰিবা। আৰু যদিহে আজিৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছা তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিবা। কিবা নুবুজা থাকিলে কমেণ্ট কৰিবা। কমেণ্ট বক্সত তোমালোকে কমেণ্ট কৰি সুধিব পাৰা বা বেলেগ কিবা ভিডিঅ' লাগিলেও তোমালোকে ক'ব পাৰা। আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। ধন্যবাদ।